यार पर मुझे ये बताओ, you studied psychology, right? I remember from That is something which I am still in the process of process studying. of like, it's something which I'm toying with right now. Right now, I'm working in अच्छा, public health. अच्छा, okay. Yeah. So you're working like as a Uh, standard doctor, yeah, standard doctor in the emergency. I work in emergency. education, mainly like Right. developing and capacity building of the emergency medical setup in Pakistan. So like because that's Of Pakistan. yes, अच्छा, yes. that's a whole So different thing. That yes, is now it's suddenly completely very interesting. कि अच्छा इसमें क्या होता वेरी है? इंटरेस्टिंग. बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, पाकिस्तान में अगर आप बात करें, जो एक इमरजेंसी मेडिसिन होती है ना, इमरजेंसी Yeah, मेडिसिन की रेजिडेंसी होती है. yeah. उस रेजिडेंसी के अंदर पाकिस्तान के जो हैं ट्रेन्ड इमरजेंसी मेडिकल प्रोफेशनल सिर्फ 15 हैं, 15 फॉर अ कंट्री ऑफ 220 मिलियन. ठीक है, What? तो समझ लें आप कितने स्क्रूड हैं इमरजेंसी मेडिसिन के अंदर. मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ, ठीक है. तो और इन 15 में से जो है एटलीस्ट जो है 9 से 10 जो है सिर्फ कराची में. बाकी जो 5 है दैट इज फॉर द होल कंट्री. ठीक है. सो बेसिकली व्हाट आई वर्क इन इज, I work in a program which is called the certification program in emergency medicine. It is not a residency, but I work in collaboration with UPenn in America in Okay. giving people the doctors the skills within 1 year. Not a residency, मगर आपको skills है ही नहीं ना, तो like हम skills दे देते 1 साल में कि यार ये आपको आना चाहिए ताकि आप इमरजेंसी में डील करो. ठीक है. Okay. सो दैट इज व्हाट आई एडमिनिस्टर दिस प्रोग्राम. साथ में मैं इसी का एक ऑफ शूट है जो मैं पीडियाट्रिक मेडिसिन का भी करता हूँ. तो जो लोग पीडियाट्रिक इमरजेंसी में आते हैं, एडल्ट की अलग है, पीडियाट्रिक की अलग है, उसको मैं करता हूँ. एंड साथ में there's another program which I also work in. लोगों को स्पेशलाइज ट्रेनिंग देते हैं जो ट्रॉमा के अंदर होते हैं, जो सिर्फ Right. जैसे एक्सीडेंट्स, बॉम्ब ब्लास्ट, ये सारा. So it's a lot of work. It's a lot of work because पाकिस्तान में आप देख रहे हैं फ्लड, ये भी एक इमरजेंसी है Yeah, उसमें. yeah, ठीक है. yeah. तो तो मतलब what sort of stuff goes into this? Like, is it like triage और इस तरह की चीजें होती हैं? यस ट्रियाज एंड एवरीथिंग. एंड प्रोसेस क्या है, किस तरह डील करना चाहिए ये. एंड इट डील्स विद एवरीथिंग वेरी सिस्टमैटिकली. हम सिस्टमैटिकली इमरजेंसी, अच्छा न्यूरोलॉजिकल इमरजेंसी क्या करना है, ठीक है, ये अगर कोई रोड ट्रैफिक इमरजेंसी, इसमें क्या करना है. गायनेकोलॉजिकल इमरजेंसी है, जैसे समझो लाइक फ्लड है, मगर फ्लड के अंदर एक औरत है, वो लेबर के अंदर भी जा रही है. Yeah. हाउ आर यू सपोज टू डील विद इट. ठीक है, तो हर चीज के प्रोटोकॉल अलग होते हैं. Hmm. सो दैट इज आई एडमिनिस्टर द प्रोग्राम. ऊपर से बेसिकली मैं पूरा एडमिनिस्टर करता हूँ. So it's a lot of collaboration जिसके अंदर हमारा we have a lot of like international universities. UPenn है, एमरी है, हमारा कनाडा के अंदर भी सिक. सो वी कोलैबोरेट ऑल, और हम यहाँ पाकिस्तान में लोगों को देते हैं ट्रेनिंग. Hmm. इट्स अ लॉट ऑफ वर्क, इट्स ग्रेट वर्क, वेरी काम बहुत है, जरूरत बहुत है इस मुल्क को. Yeah. बट या लाइक एट द एंड ऑफ द डे इट्स ऑल्सो very exhausting in the sense कि you're like कितना करूंगा मैं कि कुछ ब्रेक इवन होगा, एंड यू सी लाइक कुछ कोई काम ही नहीं हुआ है, which is also very disheartening at the same Yeah. time. Yeah. And at the same time you're also very overworked, Yeah. burnt out, underpaid, हाँ. grossly underpaid for all of this, and very underappreciated, which, and I'm speaking very frankly over here with all this stuff. आप काम, and that is the reality of being a doctor in Pakistan, where आपको एकदम से एक पॉइंट पे आके आपको क्राइसिस होता है. क्राइसिस ये होता है, you're like मैं इतना काम कर रहा हूँ, इतना एफर्ट डाल रहा हूँ इन चीजों के अंदर, एंड एंड इतना अपना टाइम डाल रहा हूँ, इतनी अपनी एनर्जी डाल रहा हूँ, एंड इफ आई एम बीइंग वेरी फ्रैंक, आई विल गेट पेड फॉर दैट lesser than how much I get paid just to put one post up on Instagram. Yeah. Yeah. That is the reality of it. हाँ. Um, like being an influencer in the sense कि मुझे चलो कोई कैंपेन मिल गई, अच्छी कैंपेन मिल गई, ठीक है, उन्होंने कहा तुम्हें एक पेड पोस्ट डालना है, उस पेड पोस्ट से मैं ज्यादा पैसे बनाऊंगा बनिस्बत कि मैं 5 दिन 8 8 घंटे हर रोज लगा रहा हूँ इन 3 4 मेडिकल प्रोग्राम्स ट्रेनिंग पीपल. एंड लोग कई दफा मुझसे ये पूछते हैं, बार बार ये मुझे पूछते हैं, और मुझे बोलते हैं बिलाल तुम तो डॉक्टर हो, तुम डॉक्टरों वाली हरकत करो, तुम डॉक्टरों वाली ये तुम क्यों करते हो साइड पे. मैं कहता हूँ जानिए आप आके मुझे बिल्स पे कर देना मुझे. अगर अगर इफ यू वर पे seriously, like if Yeah. you were paying me enough for it, Yeah. I would not do all of this. I would Yeah. not do all of this, but that is the reality of it. And now at this point, like, I mean, alhamdulillah hi bolunga and everything ki, from being an influencer and doing all this brand stuff, I make anywhere between 5 to 6, or sometimes some months even 7 times more than I make per month just being a doctor.
and that is the reality of being a doctor in या Pakistan. या और अगर अगर डॉक्टर्स स्ट्राइक पे चले जाएं कि हमारे पैसे नहीं है, वी जस्ट नॉट पेड इनफ, तो पीपल आर लाइक ओ यू शुड बी सेविंग लाइव्स, और आप लोग कैसे कर सकते हो? मुझे मतलब ये इट्स लाइक इतनी दफा ये गैसलाइट करा जाता हाँ है, एंड हाँ इतनी दफा ये गैसलाइट करा जाता है. A lot of my seniors even over here, like जो आपके होते हैं and everything, and like they will kind of poke fun at you. You're like, हाँ हमने तुम्हारा ऐड देखा था, बड़ा चवल ऐड था, बड़ा बड़ा चवल था. मैंने कहा जो आप लोग मुझसे काम कराते हैं ये भी बड़ा चवल काम है और मुझे कुछ नहीं देते इसके लिए, ठीक है, let's just be real about that, ठीक है. या 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 So like I mean that's the thing. And then you understand when you're very so much on the front line of this that you realize कि why doctors leave this country. Like मुझे literally like समझ आता है क्यों छोड़ते हैं, कुछ मिलता ही नहीं है आपको. This is, या मैं आपको सच reality बता रहा हूँ, ये reality है. कि I know a lot of people, a lot of doctors from my class who would have been like, yeah, I would have loved to stay behind, like a lot of them, but how will you stay behind on this? Like literally, how will you stay behind on this? Like what is there? That is, I'm like, honestly, मैं सच बोल रहा हूँ कि if I did not like the work that I did, and at the same time I did not have something on the side, या I या don't think I would have stayed. या Like I Alhamdulillah had something on the side. I have established myself as a writer. I make money from there. I have also established myself on my page, so I do brand endorsement या also. या So Alhamdulillah, I'm settled उस point से, ठीक है. हाँ, जो कि What if I did इत्तेफाक not है. have? या Ittifaq, it is a या total accident. This was not या something that was planned. या But if this was not there, I don't think I would have stuck या around और on इसलिए, this. और I इट्स would नॉट not. लाइक, आई एम श्योर लाइक पाकिस्तान में चलो आगा खान वगैरह को हटा दो, बट लाइक हाउ चीप कैन मेडिकल एजुकेशन बी? टू बिकम अ डॉक्टर कांट बी चीप, राइट? It's हर not cheap. किस It's very expensive. Like या it is very very expensive. Regardless, like चलो fine, अगर आप government institute के अंदर भी जाओ and everything, end में like exams होंगे, international exams भी अगर देने होंगे, and mate, it stacks up, it does या add up या and everything, and then that is the reality of it. Okay, um where, and even like how I started working, doing this current job and everything, this was also very accident. It just happened, like something came up, applied and everything, got it, and then yeah, like that's what happened. Like I like the work and everything, but at the same time it's like आप कई दफा, there are days where you question it. Like someday आपका, you get a brand deal and you look at the check that this is what they're giving you, या and it's very minimal work, minimal effort, and you're like, shit. And I was like, here I'm like working with lives and या everything, I'm या doing all this and everything, and this is what I'm getting for this, and that's where you have this crisis. That's where, and a lot of people like, कि यार, is this even worth it? ये वाली बातें बहुत या सारी आती हैं. या I'm being very honest over here. ये बड़ी बहुत दफा होता है. या